EA Sports. It's in the game. सबको मेरा प्रणाम। आज मैं F1 2022 का एक गेम शुरू कर रहा हूँ। F1 मैंने बहुत खेले थे पर याद नहीं, छूट गए थे। सुना था F1 2022 करके कुछ शुरू हुआ है, तो हम शुरू करते हैं गेम के साथ। करियर मोड में हम खुद का एक टीम सेलेक्ट करने वाले हैं। ड्राइवर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, पर मैं अपने खुद की एक टीम के साथ जाना चाहता हूँ। मैं एक न्यू कमर हूँ, बैक रो से स्टार्ट करूँगा और फुल सीज़न करना चाहता हूँ, बट मैं आपको कस्टम में दिखाता हूँ कितने रेसेस हम कर सकते हैं। फुल सीज़न में तो सारे 22 के 22 रेस होते हैं, पर कस्टम सीज़न में अगर हम जाएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम 16 रेस या फिर और कम 10 या 5 रेस भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला अभी तो हम 22 रेस का ही करने वाले हैं, मगर 16 रेस में हमारा मोनाको हट जाता है, अज़रबैजान हट जाता है, ऐसे कई सारे रेसेस हट जाते हैं। तो 22 रेस खेलने में ही मज़ा है मेरे हिसाब से, तो सारे रेस होने चाहिए ना। चलिए 22 के 22 रेस खेलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेटिंग्स आते हैं, एक तो रिकमेंडेड सेटिंग और कस्टम सेटिंग। कस्टम सेटिंग में हम AI लेवल और इन सबको सेट कर सकते हैं। रिकमेंडेड सेटिंग में अपने आप सारा जो हमारे हिसाब से रिकमेंडेड होता है वो हो जाता है। मैं कस्टम सेटिंग्स में ही जा रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से सारी सेटिंग्स कर दी हैं। अब मैं अपना आइकन खुद बनाने वाला हूँ और इससे क्या होगा कि मेरी टीम की एक अलग आइकन होगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा तेज़ी से करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसमें। And now let's focus on your driver's look. Thank you. I need a moment. Nice! It's very nice! We did it! We did it! Okay, boss, let's get this team up and running. The first thing we need to do is register. First, enter a team name. मैं टीम का नाम रेसिंग इंडिया सोच रहा हूँ। आर का लोगो भी मिल जाएगा और ऊपर से मैं मोनिका का के एक कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले रहा हूँ, क्योंकि इनको 5 कंस्ट्रक्टर पॉइंट्स ही चाहिए, जो मेरे हिसाब से आसान हो सकता है। मोनाई और रेनॉल्ट का इंजन ले रहा हूँ, साथ में इंडियन ड्राइवर जेहान दारूवाला को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आगे कार का डिकेइंग और कार को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Let's create the livery we'll be running this season. We can add more sponsors to the car as we sign them throughout the year. And don't worry, we can edit our look at any time from HQ. Great, that's everything we need. You can go back and edit anything we've done so far, and we'll come back here at the start of each season. But if you're ready to go, hit advance to head to Team HQ, and we can start our push to the top of Formula 1. तो हमारी गाड़ी तैयार, सब तैयार हो गई है। तो चलिए ग्रेस शुरू करते हैं। पहला हमारा बहरीन में होगा प्रैक्टिस सेशन, तो आइए देखते हैं। Hello folks, and welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. We're here at the headquarters of Formula One's newest team for an exclusive first look at what they will be bringing to the sport. It's always an exciting moment to welcome a new team onto the grid. However,
what makes this occasion a little more special is how strikingly different the cars are this year. Yep, the long-awaited new regulations are finally here, and with them, the start of the next era of Formula One. The 2022 season ushers in a change of direction to the regulations aimed at promoting closer racing, with new aero additions in the form of swooping front and rear wings, along with the new eye-catching 18-inch low-profile tyres that will push tyre technology to the limit. So then, the question remains as to whether this team can grasp the opportunity before them with both hands and lead the charge against the rest of the paddock. We'll find out soon enough, as the new season is just about to begin. But first, let's see the unveiling of the team's car and meet the owner of the brand new Formula One team. Well, first of all, thanks so much for inviting us here today. It's been wonderful to see behind the scenes. As you might expect, I've got about 1 million questions, so let's jump straight in. It's been a long time since we last saw a team owner take their own car onto the track, and the sport's changed enormously in the intervening years. How are you going to handle the responsibilities of both managing and driving for a Formula One team? Let's talk about your teammate. Now, it's clear they're excited to have signed with you, but tell me, what is it that you think they bring to the team? So you've obviously been putting a lot of work into the car. I know it's early days, but how do you expect it to feel out there? Most of the other teams can boast years of experience in Formula One. Where do you see the opportunities to make those vital performance gains you need to put you within reach of the other cars? Ultimately, your success this season is going to come down to whether you can take positions from the other drivers. What is it about your car that's going to give you that edge in those battles? And finally, with so many specialist departments working together here at your headquarters, and with such an important deadline coming up, who's getting that coveted Teacher's Gold Star? Which group do you feel the most proud of right now? Well, thank you so much for your time. It's been wonderful to get an insight from you and, of course, to see around the headquarters. Thank you for today. Really appreciate it. And thank you all at home for watching as well. We'll see you very soon. Hey, welcome to the team. Good to finally meet you. I'm Max. I'm the head of R&D here. I've been following your career closely, and I have to say I'm a huge fan. I think we're going to get on great. This is your machine. From here, you can track your performance, look into R&D upgrades, and much more. Let me know if you run into any problems. तो हम आ गए हैं बहरीन में. ये हमारे सिस्टम है. हमारे सामने जीहान दारूवाला बैठे हैं. इसमें हम सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. R&D के जितने भी काम हैं हम जब रेस स्टार्ट से पहले हम जो सिलेक्शन कर सकते हैं वो कर सकते हैं. आइए
अभी प्रैक्टिस सेशन 1 शुरू करते हैं। Morning mate, Mark here. Thanks again for bringing me on board. You've found a lot of talented people for this team and I can't wait to see what we can accomplish. Our journey to the Constructors' Championship starts right here today and the car is ready to head out when you are. प्रैक्टिस सेशन एक ऐसा सेशन होता है जिसमें हम गाड़ी के अपग्रेड से गाड़ी के बारे में जानते हैं, साथ बाई साथ में हम ट्रैक के बारे में जानते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ पे हमें पेस ज़्यादा रखना है। इस प्रैक्टिस से हमें क्वालिफाइंग में बहुत मदद मिलती है, इसलिए प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. चलो अभी प्रैक्टिस सेशन में मैं प्रैक्टिस थोड़ा कर लेता हूँ, क्वालिफाइंग सेशन में आपसे मिलते हैं। चलिए क्वालिफाइंग देखते हैं। And with the cars now over the line, let's see our top three again. Leclerc, Hamilton and Max Verstappen. तो यहाँ से क्वालिफाइंग शुरू होता है और हम यहाँ से क्वालिफाइंग में हर लैप में जितना तेज़ चला सकते हैं उतना तेज़ चलाएंगे ताकि हमारा जो टॉप 10 पोजीशन में या जिस पोजीशन में हमारी गाड़ी है वहाँ से हमें रेस में थोड़ा मदद मिले। मैं सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहा हूँ, मीडियम्स जो है लॉक हो रखे रेस के लिए, पता नहीं क्यों, तो सॉफ्टवेयर से ही हमें चलाना पड़ेगा लगता है तीनों सेशन। तो चलिए सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं अपना रेस। Okay, when you're ready, let's go. वैसे नई गाड़ी है पर इन ट्रैकों में थोड़ा स्पिन अराउंड का प्रॉब्लम्स रहता है, नई गाड़ी और नए ट्रेनिंग की वजह से। जैसे आप देख सकते हैं मैं प्रैक्टिस सेशन में तो बहुत बार हुआ, क्वालिफाइंग के वार्म अप लैप में भी मेरा ये हुआ, बट समहाउ मैंने मैनेज करके निकाला। अलेक्जेंडर एल्बॉन के पीछे था मैं बिल्कुल, तो उसके बाद से मेरे को क्वालिफाइंग स्टार्ट करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्वालिफाइंग में, क्या मैं रेस करते वक्त भी या क्वालिफाइंग लैप में भी ऐसे करता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ से हमारा लैप कभी भी शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं तो यहाँ से DRS सेक्शन ओपन हुआ और हम सारा हॉट लैप देते हुए गाड़ी में ERS पूरा बर्न करते हुए हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में पेस है पर कंट्रोल करते टर्निंग में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेकिंग सेक्शन में भी। तो एंड मोमेंट में ब्रेक देते हुए मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ले रहा हूँ, अगला DRS जोन आने वाला है और DRS एक्टिव करते हुए इस लैप को मैं बहुत अच्छे से ले जा रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
तो आप देख सकते हैं मेरा टाइम लैप उतना अच्छा नहीं था, 133.448, तो यही टाइम मैं बना पाया। तो हम वापस बॉक्स कर रहे हैं। अब बॉक्स करने के बाद देखते हैं अगर टायर चेंज करना हो या फिर हमारे लिए ये टाइम काफ़ी हो टॉप 15 में आने के लिए। मेरे हिसाब से तो ये टाइम काफ़ी है, क्योंकि मेरे पीछे जितने भी गाड़ियाँ हैं वो इससे कम टाइम में ही चल रही हैं और ट्रैक भी बहुत बिजी लग रहा है इस सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं केविन मैग्नुसन 11th में, 111 उनका अभी सेक्टर है, तो उनका भी 135 से ऊपर ही जा रहा है। तो एक भरोसा है, देखते हैं पूरा पार करके। Minute to go. सेवन्थ फास्टेस्ट ही आ पाया। मैं सोचा थोड़ा और तेज़ जा पाऊँगा, पर मैंने पहला लैप जो बीट किया उसका टाइम भी मैं बीट नहीं कर पाया सेकंड टाइम में। जीहान दारूवाला फर्स्ट क्वालिफाइंग से बाहर हो गए। तो चलिए अब टॉप 10 की फ़ाइट पे ज्वाइन करते हैं और टॉप 10 के साथ फ़ाइट करते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ, जिस हिसाब से मेरा ये टाइम चार्ट दिखा रहा है और मेरे पास सॉफ्ट टायर्स ही हैं, तो कोशिश करते हैं टॉप 10 में आने की। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। हमारा अगला क्वालिफाइंग सेशन भी शुरू हो गया। हम इस लैब में जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या टाइम ले पाते हैं इस लैब में। 135 का उम्मीद है, तो उसी टाइम को मेंटेन करेंगे।
क्वालिफाइंग कंप्लीट हुआ और आप देख सकते हैं कि फास्टेस्ट लैप चार्ल्स लेक्लेयर ने किया और 1:33 का मैंने सेशन पूरा किया। अब थर्ड क्वालिफाइंग शुरू हो रहा है, तो मे बी उसी टाइम को मैं मेंटेन कर पाऊँ। मेरा एक्सपेक्टेशन तो 1:35 में था और मैं 1:33 पे आ गया, तो शायद से 1:33 वापस कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए। Ocon's behind you. Right, their best lap time is a 1:34.0. Lando's ahead of you now. Our gap to the car in front is 44.6 seconds. So their best lap time is a 1:33.8. With qualifying finished, it's time to remind ourselves once again of our top three: Leclerc, Verstappen and Carlos Sainz. Well, that wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. क्वालिफाइंग ख़त्म हुआ और हमें 8th पोजीशन मिला है। और वैसे देखा जाए तो मेरा 133 तो एक्सपेक्ट कर रहा था, पर 133.955 हुआ है, थोड़ा पहले से कुछ सेकंड्स कम थे, 0.10 सेकंड्स, और मैं 8th पोजीशन में हूँ, बिल्कुल लैंडो नॉरिस के पीछे हूँ। तो आइए रेस में देखते हैं हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मैं तो टॉप 5 का एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ, बट मुश्किल है क्योंकि इस कार में इतना पावर नहीं है। ये एक बैक कार है, मे बी
क्वालिफाइंग अच्छा गया, रेस पे पता नहीं क्या होगा, पर हार नहीं मारना चाहिए, जैसे कहते हैं कभी हार ना मानो। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब बटन तो बनता ही है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा तक। Months of rumour and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round one of this year's Formula One World Championship. We go racing today around the 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit with 15 corners and 2 good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tyre into the tricky braking zone of turn 10. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Charles Leclerc lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Sainz, Russell, Sergio Perez and Hamilton, Norris, the owner driver, Ocon and Alex Albon, Bottas, Fernando Alonso, Kevin Magnussen and Vettel, Mick Schumacher, Ricciardo, Jehan Daruvala and Lance Stroll, Latifi, Gasly, Joe, they've taken a grid penalty, and Yuki Tsunoda. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. And they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Clutch in, hold until lights out. Let's build the revs up and hold them. The formation lap is an opportunity to practice your race start and put some energy through your tyres and brakes to get them up to the optimal temperature for the beginning of the race. When the light goes green, pull away from the grid and stay in position, making sure to keep your car in good condition as you drive a lap at a steady but consistent pace in order to prepare for the start of the Grand Prix. As you return back to the grid having completed the formation lap, you must park your car within the correct grid slot. Once you are happy with your car's position, bring the car to a standstill in readiness for the race start. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tyres properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. अभी हमारा फॉर्मेशन लैप शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मैं P8 पे हूँ और फॉर्मेशन लैप में हम टायर बर्न कर गर्म रखते हैं ताकि वो एक वार्म अप लैप जैसा होता है जिससे हमें स्टार्ट पे ग्रिप ज़्यादा मिले। और मैं थोड़ा सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ, फ्रंट बायस थोड़ा आगे रख रहा हूँ ताकि जब टर्न 1 में आऊँ मेरे को ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा मिले। और डिफरेंशियल भी 85 में इसीलिए रख रहा हूँ ब्रेकिंग के लिए, और डिफरेंशियल्स ईजी रहेगा। तो लैंडो नॉरिस मेरे आगे हैं और हैमिल्टन है, उसके बाद रसल है, रसल से आगे मेरे पास पेरेज हैं। तो मुझे जो ओवरटेकिंग है टर्न 1 में बहुत अच्छे से लेना होगा, तो मुझे इनसाइड लाइन रखना होगा। अभी फॉर्मेशन लैप तो चल रहा है, मैं जितना वार्म कर सकता हूँ उतना वार्म कर रहा हूँ। तो वार्म करने के लिए टायर को हमें पहले क्या करना होता है, गाड़ी को जिगजैग चलाना होता है। इससे क्या होता है, जब सरफेस में ज़्यादा रब होता है तो उससे वार्म हो जाता है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट में मोस्टली कार्स जिगजैग होती हैं। आगे आप लैंडो नॉरिस को भी देख सकते हैं। तो फॉर्मेशन लैप ख़त्म होने वाला है
मैं अभी पॉइंट सिलेक्शन पे आ रहा हूँ जहाँ पे मेरे को गाड़ी को पॉइंट पे रोकना है, और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ। इससे पहले वाले किसी भी रेस में ये ऑप्शन नहीं होता था, पिट लेन से पहले ही रोक देते थे ग्रीन में। अच्छा, ग्रीन में डिसेंट पार्किंग कर रहे हैं, वाह, मतलब और आगे जाना था मुझे। तो मैं तो सोचा ग्रीन तक ही है, इसलिए मैंने वहाँ ब्रेक मार दिया। अब पता चला ग्रीन तक नहीं, ग्रीन से आगे और जाना था। चलो कोई नहीं, अभी तो रेस स्टार्ट होने वाला है। तो सारे लोग लाइन पे लग गए, तो वो 5 लाइट का इंतज़ार है, फिर रेस शुरू करते हैं। एंड इट्स लाइट्स आउट एट द वे वी गो। हमने गाड़ी को अच्छे पेस में रखते हुए लैंडन नॉइस को ओवरटेक कर लिया, और इनसाइड लाइन में हम हैमिल्टन पे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनसाइड लाइन में कितनी वो हो रही है, वक्त मच रही है। और मैं इनसाइड लाइन में लेते हुए साइंस से भी आगे निकल रहा हूँ। क्या हम साइंस को ओवरटेक कर पाएंगे इस टर्न में? वो इनसाइड में अब है, और नहीं, यहाँ व्हील टू व्हील फाइट चल रही है, और साइंस के साथ ज़्यादा पावर होने के कारण वो आगे निकल गए। अब हमारी फाइट मर्सिडीज़ के साथ होने रही है जो हमारे पीछे है। हमें डिफेंसिव मोड में ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं। और मैं साइंस के आउटसाइड में ट्राई कर रहा हूँ, और क्या ये हो पाएगा? मुमकिन है, क्योंकि व्हील टू व्हील रेस हो रही है, और यहाँ पे साइंस के साथ हमारा कॉन्टैक्ट हुआ व्हील टू व्हील बम्प में। हमारा फ्रंट विंग टच नहीं हुआ, नहीं तो हमने वार्निंग आ जाती। बट कार्लो साइंस के साथ टक्कर हुआ करके हमें वार्निंग आया, तो ठीक है, हमें थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अब हम पेरेज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। क्या पेरेज ने दोनों मर्सिडीज़ को ओवरटेक किया, पर पेरेज आउटसाइड से हमें ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ गए। हैमिल्टन भी हमें ट्राई कर रहे हैं, और हम इनसाइड में डिफेंड करते हुए हमने उनको ब्लॉक कर दिया है। और अभी हम पेरेज को वापस ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेरेज ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम पावर यूज़ करें तो शायद से हम पहुँच भी सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगी पड़ी है, सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस गैप नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग 2 लैप में हुआ है। और पेरेज हमसे थोड़ा आगे जल्दी से जा रहे हैं, उन्होंने अभी से ही 1 सेकेंड का गैप बना लिया है। ये लैप 5 चल रहा है, और मैं थोड़ा पेरेज से बहुत पीछे हो गया, 3-4 सेकंड। और हैमिल्टन भी हमें ओवरटेक करते हुए हमें इनसाइड लाइन यहाँ लेने की सोच रहा हूँ। मैं लेट ब्रेकिंग करते हुए, और मैं इनसाइड लाइन गया, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट हुआ है, पर गाड़ी में कहीं नहीं लगा। मेरा फ्लोर भी ठीक है, आप देख सकते हैं रिप्ले में कैसे, क्योंकि मुझे इनसाइड लाइन लेना था, मैंने लेट ब्रेकिंग का यूज़ किया, पर टायर टू टायर व्हील बम्प ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब पेरेज भी 3 सेकंड आगे हैं, और टायर में भी कोई इशू नहीं है करके बता रहे हैं हमारे जेफ। हैमिल्टन बॉक्स कर गए हैं, तो हमारे पीछे जॉर्ज रसल लगे हुए हैं। जॉर्ज रसल जो है ओवरटेकिंग में बहुत अच्छे थे, मैंने स्टार्टिंग में देखा था। तो अब देखते हैं, क्योंकि अभी हम इन शिकेंस में से, क्योंकि मेरा ये टर्न थोड़ा वीक है, मैं ब्रेकिंग ज़्यादा ले रहा हूँ इन टर्न्स में, तो अभी तो मैं उनसे 5/10 ऑफ अ सेकेंड में आगे हूँ, 5/10 ऑफ अ सेकेंड। तो देखते हैं, क्योंकि इस टर्न में तो मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ, मैं ज़्यादा वाइड चले जाता हूँ ब्रेकिंग सेक्शन में, और मैं सच्ची में वाइड गया हूँ इस बार। इसमें जॉर्ज रसल को थोड़ा और मेरे पास आने का वो मिल गया, चांस मिल गया, और लगता है मुझे सेम मूव हैमिल्टन के साथ जैसे कि मुझे करना पड़ेगा। व्हील टू व्हील जा रहा है, और मैं इनसाइड लाइन लेते हुए, क्या मैं इनसाइड लाइन में ले पाऊँगा सक्सेसफुली? और मैं ज़्यादा आउट लाइन में आ गया हूँ, जिस कारण वो इनसाइड से रसल मेरे आगे चले गए। चलो कोशिश करते हैं, इस लैप में रसल को ले सकते हैं हम। ये फाइनल टर्न में अपने इनसाइड लाइन में लेते हुए हम आगे निकल गए रसल से। अभी हमारा बॉक्सिंग लैप है, तो हम बॉक्स कर रहे हैं। इसमें भी सेम जैसे हमने पार्क करते तो जो ग्रीन लाइट है, वैसे ही हमें राइट लेना है वो सिलेक्शन मार्क में, उससे हमारा पिट स्टॉप का टाइम डिसाइड होगा। आप देख सकते हैं, और मैंने राइट लिया, मैं लेट था, तो 3 सेकंड का डिले मीन्स 3 सेकंड तक होगा पिट स्टॉप, बहुत लंबा है। कोई नहीं, पिट स्टॉप कंप्लीट हुआ। चलो लैप 9 में हैमिल्टन ने मेरे को इनसाइड से लिया। ये टर्निंग सेक्शन बहुत टफ था, पर उन्होंने लिया। पर हम भी व्हील बैक करते हुए गलती से ब्रेक सेक्शन में ज़्यादा वो टच करते हुए निकल गए, पर तब भी हैमिल्टन के पास पेस ज़्यादा है, वो आपसे आगे है। चाहे हमारे पास DRS हो, तो हमें लगता है वापस वो इनसाइड लाइन का ट्रिक उनके ऊपर यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर रखा है हैमिल्टन हमें। लगता है इस लैप में हमें उनके पीछे रहना होगा। टर्न 1 वाले सेक्शन में हम उनको ओवरटेक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ओवरटेक करना मुश्किल है। ये क्या बहुत पास आते हुए हमने नियरली उनको टच कर दिया था। लगता है इधर ही हम टर्न ले पाएंगे। क्या ओवरटेक कर पाएंगे इनसाइड लाइन पे फाइनल टर्न पे? ये थोड़ा ज़्यादा क्लोज है हम, और ब्रेकिंग सेक्शन में आते हुए नहीं, पीछे ही थे हम। थोड़ा हमें भी वाइड होना पड़ गया उनके थोड़े डिफरेंशियल में। हम बहुत डर्टी एयर पे उनके चल रहे हैं। चलिए इस टर्न पे ओवरटेक करते हैं।
Okay, you're in the dirty air of the car in front. Let's get past them. अभी हम टर्न 1 पे आउटसाइड से हैमिल्टन के ट्राई करने वाले हैं. हम आगे हैं और ये एंड ऑफ द ब्रेकिंग में थोड़ा सा ट्रैक से बाहर हो गए, पर हम आगे थे इसलिए बच गए. हैमिल्टन से हम आगे क्या यहाँ व्हील टू व्हील रेस होगा? मुझे तो लग रहा है, क्योंकि हैमिल्टन के पास अब DRS भी है और हम उनसे 1 मिनट DRS हमारे पास आ गया क्योंकि हम टर्न्स में पीछे थे शायद से उनसे. और यहाँ पे फर्नांडो भी उनके साथ थोड़ा फाइट कर रहे हैं, तो ये चांस हमारा है कि हम दोनों से आगे रहें, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा. चलिए देखते हैं. 5.3 seconds. फाइनल लैप ऑफ द ग्राउंड प्री है और हैमिल्टन ज़्यादा पास में हमारे, और इस जगह में तो हम थोड़ा टैकल कर सकते हैं. तो इस रेस में हम P6 एंड करेंगे लगता है, P7 ज़्यादा से ज़्यादा. और देखिए बहुत कम डिस्टेंस पे ही है, तो हमारे पास लास्ट स्ट्रेट ही एक बचा है. अगर इसमें हमारा थोड़ा सा पेस रहा, हमने मोड ओवरटेकिंग मोड का हमने इस्तेमाल किया, तो हम थोड़ा सा पेस रख सकते हैं. आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गैप बना रहे हैं हम हैमिल्टन से, और ये हम जा रहे हैं फ्लैग की तरफ. और विनर तो मैक्स विस्टैपन है, पर पहले रेस में हमने P6 लिया है. वाओ. Okay, pick up rubber and bring it home. Red Bull pulling out all the stops today. What a great win. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sports that you can't help but be delighted by today's race win. यहाँ आप देख सकते हैं कैसे रेड बुल ने अपना पहला रेस जीता है. साथ में फरारी ने भी पोडियम लिए, दोनों पोडियम बाकी जो हैं वो फरारी ने लिए हैं, लेक्लेयर और कार्लोस साइंस ने. और आप देख सकते हैं कितना रेड बुल अपने परफॉर्मेंस में दिखा रहे हैं. ई स्पोर्ट्स रेसिंग में भी पेरेस P4 रहे हैं और सबका इतना अच्छा रेस था. हम भी P6 में आए हैं. So let's review the driver's standings. So, Anthony Davidson, who would you rank as your driver of the day? It's got to be Lewis Hamilton. I mean, he pulled off some impressive feats out on the track today, even by his standards. Let's move on to the constructors, and Red Bull take over as championship leaders. It's been an absolutely wild weekend of Formula One action, and I can't wait to see what's next. और आप देख सकते हैं कि कैसे जॉर्ज रसल भी P5 में है और हमारे साथ हैमिल्टन भी पीछे हैं. तो ये रेस तो बड़ा मज़ेदार रहा बहरीन में. अब ड्राइवर ऑफ द डे तो हैमिल्टन को ही गया है, पर मेहनत सबने की थी तो सबको ड्राइवर ऑफ द डे मिलना चाहिए था. चलिए रेस ख़त्म करते हैं. The personnel department has asked us to deal with this. We have a couple of options here. Take your time. What you decide to do will have consequences. Thanks. I know these kinds of decisions can be challenging, but I think you made the right call.
अगला रेस हमारा सऊदी अरब में अगले संडे, आप देख सकते हैं सऊदी अरब ग्रांड प्री है। तो ये सेशन हम यही बंद करते हैं, हम अगले संडे आपसे मिलेंगे। अगर आपको मेरा रेस पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, लव एंड पीस फ्रॉम बर्न टायर्स।